Hello and namaskar everyone. Good evening. This is me Aakriti Magotra. Welcome back to our channel Adda247 Judiciary. तो कल हम लोगों ने 29 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए थे. अब हम आगे चलते हैं और आज सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 30 से. शुरू करें क्लास. बताइए. क्वेश्चन नंबर 30 से हमने स्टार्ट करना है, सॉल्व करना, साथ में मिलके सॉल्व करेंगे. So what the question number 30 says? Okay. During the execution proceedings, if a question arises as to whether any person is a representative of a party, such question shall be determined by. ये आपका सेक्शन है सीपीसी का, वहाँ पे बताया है वहाँ पे बताया हुआ है, क्लियरली बताया है. Okay. So it is the court executing the decree जो है वही डिसाइड करेगी, वही ये क्वेश्चन को डिसाइड करेगी एज टू वेदर एनी पर्सन इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी. ये आपका कहाँ पर दिया है? सेक्शन 47 ऑफ द सीपीसी. ओके, क्या ऑप्शंस दिए थे? द कोर्ट विच पास द डिक्री, द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री, द एपेलेट कोर्ट और अ सेपरेट सूट, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. ओके. Now, question 31. Private alienation of property by the judgment debtor after attachment under section 64, clause 1 of the CPC is option A valid, option B voidable, option C void, option D none. What should be the right answer? What should be the right answer? Yes, the correct answer is C, that it is void. It is void. Okay. Now moving ahead, question number 32. The screen is visible? Screen is visible? सबको अच्छे से questions दिख रहे हैं? सबको अच्छे से questions दिख रहे हैं? Okay. Question number 32. Under Order 32, Rule 2 ACPC, a person guilty of disobedience of breach can be penalized by option A, attachment of property, option B, detention and civil imprisonment, option C, either A or B or both, and option D, either A or B. What should be the right answer? What should be the right answer? और जूम कर दें, ठीक है. Okay, question number 32. What should be the right answer? Comment कीजिए. What should be the right answer? युक्ता जी बताइए. क्वेश्चन नंबर 32 का क्या राइट आंसर है? The option C is the correct answer. Option C is the correct answer, yes. Now question number 33. Under the provisions of CPC, plea of adverse possession is a defense available. Option A, only to plaintiff against defendant.
Option B, only to defendant against plaintiff. Option C, both plaintiff and defendant. Option D, only to movable property. Option E, only immovable property. Question number 33. Under the provisions of CPC, plea of adverse possession is a defense available only to plaintiff against defendant, only to defendant against plaintiff, both plaintiff and defendant, only to movable property और only immovable property. आंसर कीजिए. The correct answer is B, only to defendant against the plaintiff, because adverse possession का जो plea है वो कभी भी एज अ स्वॉर्ड यूज नहीं होता है. इट इज ऑलवेज एज अ शील्ड. इफ समबडी इज अटैकिंग यू, देन ओनली यू कैन यूज द डिफेंस ऑफ एडवर्स पोजेशन. ठीक है, आप कभी भी इस बेसिस पे एक डिक्लेरेशन सूट फाइल नहीं कर सकते एडवर्स पोजेशन के बेसिस पे कि जी मैं ऑनर हूँ. ठीक है, इट इज ऑलवेज यूज एज अ शील्ड एंड नॉट एज अ स्वॉर्ड. ओके. Question number 34. Preliminary decree can be passed in a suit for partition of then in a suit for partnership. Option C, for possession and mean profits. Option D, all of the above. Option E, none of the above. Preliminary decree, final decree, ये डिक्री की डेफिनेशन में आप पढ़ चुके हैं. कौन से सूट्स में प्रीलिमिनरी डिक्री पास की जाती है? पार्टीशन सूट्स हैं या पार्टनरशिप सूट, possession and mean profits का सूट, all of above or none of the above? The correct answer is option D. The correct answer is option D. Okay. Which of the following is not a decree? But ये वाला जो question था इसमें कुछ problem थी, and that's because this question has been deleted. उसे ये question को delete कर दिया गया था, so we are not concerned with this question now. Under dash, redemption of mortgage can be sought by any of the legal representatives after the death of the mortgager. Option A, Order 34, Rule 1 CPC. Option B, Order 33, Rule 1 CPC. Option C, Order 32, Rule 1 CPC. Option D, Order 31, Rule 1 CPC. Option E, Order 35, Rule 1 CPC. तो ये डायरेक्ट आपका जो है सेक्शन ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन है. तो इसका क्या आंसर होगा बताइए. गुप्ता कह रही हैं ए. जी करेक्ट. Okay, the right answer is option A, Order 34, Rule 1 CPC. Question number 36 का ये right answer है. I think visible है सबको. Okay. Moving to question number 37. In which of the following writs the doctrine of res judicata is not applicable? Question number 37. Question number 37. Option A, habeas corpus. Option B, certiorari. Option C, mandamus. Option D, quo warranto. रेस जुडिकाटा जो है आपका, जो रेस जुडिकाटा का डॉक्ट्रिन हम पढ़ चुके हैं, मतलब आपने पढ़ा है कि रेस जुडिकाटा क्या होता है. तो अब बताइए ये कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है. द करेक्ट आंसर इज हेबीज कॉर्पस. हेबीज कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस वंस बॉडी, टू हैव बॉडी, टू हैव बॉडी. जब भी कभी किसी इंसान को रिस्ट्रेन किया जाता है या फॉल्सली या जो है इम्प्रिजन किया जाता है वहाँ पर हेबीज कॉर्पस की रिट लगाई जाती है. सो एज कि ये जो डिटेंशन है इट इज़ एन इलीगल डिटेंशन. तो इंसान को डिटेन करके रखा गया इलीगल है.
तो काइंडली इस पर्सन को प्रोड्यूस किया जाए टू हैव द बॉडी. दिस इज व्हाट हेबियस कॉर्पस मींस. एंड हेबियस कॉर्पस की जो रिट है उसके ऊपर इस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है या डॉक्ट्रीन है वो एप्लीकेबल नहीं होती है. मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 38. If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court, the acts performed by the President incumbent before the such date of before the date of such decision of court are valid but subject to judicial review. Option B invalid, option C valid, option D valid but subject to the approval of the Parliament. What should be the right answer? अगर प्रेसिडेंट की जो इलेक्शंस हैं वो डिक्लेयर कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड, तो तब तक जो भी प्रेसिडेंट ने एक्ट्स परफॉर्म किए हैं बिफोर द डेट ऑफ सच डिसीजन ऑफ द कोर्ट, तब तक के उनके डिसीजंस जो हैं वो वैलिड माने जाएंगे, इनवैलिड माने जाएंगे, या फिर वैलिड माने जाएंगे तो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू वैलिड माने जाएंगे, या फिर वैलिड माने जाएंगे तो टू द अप्रूवल ऑफ द सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. What should be the right answer of question number 38? ये आपका आर्टिकल भी है जहाँ पे बताया गया है. What should be the right answer? So सभी एक्ट जो होंगे, क्योंकि तो ऐसा होगा कि जो भी प्रेसिडेंट ने उससे पहले किया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से आने से पहले, he has the authority to do that thing. उनके पास अथॉरिटी थी वो सब करने की, तभी किया है, तो वो सारे एक्ट्स जो होंगे वो वैलिड ही होंगे. ठीक है. Question number 39. Which of the following sentence or sentences is or are correct? The president can commute death sentence to life imprisonment. The governor cannot commute death sentence to life imprisonment. The president's power to pardon extends to the punishment or sentence by court martial. ये court martial होगा. Now the options are option A जहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड बोला है कि सब करेक्ट हैं, बी में कहा है कि सिर्फ सेकंड करेक्ट है, सी में कहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट, और डी में कहा है कि फर्स्ट करेक्ट है. व्हाट शुड बी द राइट आंसर? The right answer, the right answer is option C. The president can commute death sentence to life imprisonment, but ये पावर गवर्नर जो है इनके पास नहीं है, इन्होंने कहा है. और जो प्रेसिडेंट्स पावर है to pardon extends to the punishment or sentence by court martial, that is also correct. So option C आपका यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाता है. So question number 40. In 2017, the Supreme Court held that right to privacy is protected under Article 21 of the Constitution of India in the context of a state surveillance, power of search and seizure, होमोसेक्सुअलिटी और इंडियन बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन स्कीम. देखिए 2017 में राइट टू प्रिवेसी से रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था, सबको पता है, पुट्टा स्वामी का जजमेंट था. इसमें ये बात कही गई थी. तो इसमें किस चीज, किस कंटेक्स्ट में राइट टू प्रिवेसी की बात कही है वो बताना है आपको. क्वेश्चन नंबर 40 का व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ये पुट्टा स्वामी केस की रेफरेंस में है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. ओके. पुट्टा स्वामी जजमेंट में बात जो है Question number 41. The Constitution of India empowers the Supreme Court of India to adjudicate the disputes between the centre and the states through first
Appellate jurisdiction, original jurisdiction, advisory jurisdiction, writ jurisdiction, or none of the above? Which should be the correct answer of question number 41? What should be the correct answer of question number 41? The correct answer to question number 41 is original jurisdiction, because सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि जब सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो है डिस्प्यूट होगा तो उनकी जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की वो दैट फॉल्स अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. अपील के थ्रू नहीं जाता है, एडवाइस भी नहीं है, रिट भी नहीं है, इट इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 42. Which of the following is not true about the Attorney General of India? इसमें ऑप्शंस हैं आपके. पहले 3 स्टेटमेंट्स दी हैं. ही इज द हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. He has the right of audience in all the courts in India. He has the voting right in the proceedings of the parliament. His term of the office and remuneration is decided by the president. One of the eligibility criteria for appointment as the Attorney General of India is that the candidate must be qualified to be appointed as a judge of a Supreme Court of India. तो ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़ी रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बताना है कि व्हाट इज विच इज नॉट ट्रू अबाउट द अटॉर्नी जनरल, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए ट्रू नहीं है, आपको ये बताना है. सो व्हाट शुड बी द आंसर? बताइए, फिर से देख लीजिए ऑप्शन स्टेटमेंट्स है 42. The highest legal officer, he has the right of audience, he has the voting right in the proceedings. His term of office and remuneration is decided by president. One of the eligibility criteria for appointment as the Attorney General is that the candidate must be qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court of India. What should be the right answer? The correct answer is only 3. कि उनके पास जो है वोटिंग राइट्स हैं. ये बात जो कही गई है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो सही नहीं है, because he doesn't have the voting right. Okay, now moving ahead to question number 43. Which of the following are true about the fundamental duties for Indian citizens? They require us to safeguard public property. They require us to protect and improve the natural environment. They are contained in Article 51A of the Constitution of India. They are added by 42nd Amendment of the Constitution. They require us to develop the scientific temper and spirit of inquiry. There were originally 11 fundamental duties. Then 7th statement is they can be enforced through the writs as well as promoted through the constitutional methods. We have these 5 options A, B, C, D, E. Tell me which is the correct answer. Tell me which is the correct answer. The correct answer is, आप बताइए पहले. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. जो बात कही गई है दैट देयर वर ओरिजिनली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, दे कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू writs as well as promoted through constitutional methods. दिस इज नॉट सो. ओके, और यहाँ पर जो 51 के एक है फंडामेंटल ड्यूटी जो इनकॉर्पोरेट की गई थी. 51 के वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय द 86 अमेंडमेंट एक्ट. ओके, नाउ 44 में ये लिस्ट दी है आपको कि इंदिरा साहनी का केस जो है वो किससे रिलेट करता है. लिस्ट 2 में आपको बताना है कि दिस केस इज रिलेटेड टू व्हाट. तो इंदिरा साहनी का केस किससे रिलेटेड है, केशवानंद भारती केस किससे रिलेटेड है, अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस
यूनियन ऑफ इंडिया का केस, सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, वैलिडिटी ऑफ नार्को एनालिसिस, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मंडल कमीशन केस या पैथव यूथनेशिया। इसके लिए जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ दिए हैं। तो आपको इस तरीके से जो है इसको ज्वाइन करके देखना है। फर्स्ट केस इज रिलेटेड टू व्हाट, सेकंड केस इज रिलेटेड टू व्हाट। ओके, तो ये आप देख लीजिए। इंदिरा साहनी, केशवानंद भारती, शॉनबाग, सेल्वी, तो हम यहीं पे देख लेते हैं ये केसेस किससे रिलेटेड है, आगे ऑप्शन में मार्क कर लें। देखिए, इंदिरा साहनी का केस एवरीबडी नोज रिलेटेड टू मंडल कमीशन, तो ए का जो है क्या ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ। देन वी हैव केशवानंद भारती केस रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ वैलिड स्ट्रक्चर, तो आपका जो बी है केशवानंद भारती का केस दैट इज रिलेटेड थर्ड पॉइंट। देन वी हैव John Bugs case that is related to passive euthanasia. Then we have Selvi's case, it is related to validity of the narco analysis. Okay, so your option जो correct होगा यहाँ the right option is option A. Question 45. Doctrine of legitimate expectation and Venisbury principles were read by Supreme Court into which article? Question number 45. बताइए। Doctrine of legitimate expectation and Venisbury principles were read by Supreme Court into? What should be the right answer? Article 14. Okay. It's Article 14. ये जो principles थे incorporate किए गए थे, were read by the Supreme Court into these Article 40. 46 question. Reference by the President of India under Article 143 Clause 1 of the Constitution, Keshav Singh's case relates to what? Is it Ayodhya issue? Is it Delhi laws? Is it privileges? Or is it judges' appointments? Question number 46. Question number 46 solve कीजिए. The correct answer is privileges. Okay. यहाँ पे advisory jurisdiction की बात हो रही. Which of the following statements are true regarding the decree of declaration? कौन सी statements जो है वो correct है related to decree of declaration? Statements पढ़ते हैं. It creates no new rights. It cannot be prayed as a matter of right. If all the parties and are not joined, declaration cannot be granted. Such a decree is conclusive between the parties to it and persons litigating through them. ऑप्शन ए की सारी करेक्ट है. ऑप्शन बी फर्स्ट, थ्री एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शन सी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है. What should be the right answer? कमेंट कीजिए, अपना पार्टिसिपेशन शो कीजिए. Yes, you are solving it. इस सेशन का पर्पस ही यही है कि आप सॉल्व करें.
यहाँ पे कुछ चीज आपको समझाई नहीं जा रही, पढ़ाई नहीं जा रही, आपको बोला जा रहा है कि आप सॉल्व करें, हम मिलके सॉल्व करें यहाँ पे। प्लीज शो योर पार्टिसिपेशन। What should be the correct answer of question number 47? तो इससे रिलेटेड सभी की सभी स्टेटमेंट वो करेक्ट है, ठीक है। All the statements are true regarding the degree of declaration. This is what question number. This is the correct answer of question number 47. Moving ahead, question number 48. Extended period of limitation for institution of a suit for specific performance of contract cannot stretch beyond dash from the cessation of the disability. जब disability खत्म हो जाती है तो आपका जो टाइम पीरियड है फॉर इंस्टीट्यूटिंग द सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उसे कितने सालों तक के लिए, यू नो, इट कैन नॉट स्ट्रेच बियॉन्ड हाउ मेनी इयर्स, दैट इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 48. The correct answer is 3 years. The correct answer is 3 years. Okay. Now, question number 49. Under Section 6 of Specific Relief Act, the suit cannot be brought by a servant, manager, can be brought by a servant, a manager, a tenancy by holding over, a trespasser. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का क्वेश्चन है, सेक्शन 6 के बारे में पूछा गया है। सूट कैन बी ब्रॉट बाय हूम? क्वेश्चन नंबर 49. द करेक्ट आंसर इज टेनेंसी बाय होल्डिंग ओवर, बिकॉज सेक्शन 6 जो है आपके पोजेशन की बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और टेनेंसी बाय होल्डिंग ओवर वो टेनेंट्स होते हैं जिनका जो राइट है वो तो खत्म हो गया, उनकी टेनेंसी जो है वो खत्म हो चुकी है, बट दे स्टिल लिविंग देयर, और जो वो अपना रेंट भी पे कर रहे हैं और लैंडलॉर्ड उनके रेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाता है कि उन्हें होल्ड बनाए रखा है, ऑल दो टेनेंसी ओवर हो चुकी है बट दे आर होल्डिंग इट, सो दैट इज अ टेनेंट। टेनेंसी बाय होल्डिंग ओवर का यही मतलब होता है। सेक्शन 6 आपका बात करता इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है, जहाँ पे सूट लेके जा सकते हैं कौन, जिसके पास पोजेशन है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, दैट पर्सन कैन ब्रिंग द सूट। क्वेश्चन नंबर 50. By virtue of Section 6 of the Specific Relief Act, a suit for possession of an immovable property can be filed within a period of dash of dispossession. आपको जब डिस्पोजेस कर दिया गया है, सेक्शन 6 में हम यही बात कर रहे थे ना, इसमें सूट लाया जाता है फॉर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो आप जो ये सूट जो है डिस्पोजेस होने के कितने कितने टाइम बाद जो है, या विद इन हाउ, what is that timeline, what is that time period within which you can file the suit for the possession within a period of dash of dispossession? Question number 50. Okay, the correct answer is 6 months. Okay. Question number 51. It is mandatory that transfer of an actionable claim can be effected only by an instrument in writing, but it does not have effect on. ये आपका टीपीए का क्वेश्चन है। टीपीए की सेक्शन बता देती हूँ, 137 है। अब बताइए आप इसका क्या आंसर होना चाहिए। ए, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, arrears of rent, C, an amount due under a letter of credit, or D, none of the above. Question number 51. आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। टीपीए का क्वेश्चन है, एक्शनेबल क्लेम के बारे में बात हो रही है, बताइए क्या आंसर होगा इसका।
बताइए क्या आंसर होगा इसका. आई वॉन्ट आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन. बताइए. The correct answer is the negotiable instrument, option A. Okay. Now, which of the following statements are true? Again, statement based question. Minors contract can be ratified on attaining majority. Minors contract cannot be ratified on attaining majority. Minors contract can be ratified jointly by both the parties to the contract. Minor is not liable under minors contract, and minors contract is an enforceable contract. What should be the correct answer? Option A, first and third. Option B, fifth and second. Option C, second and fourth. Option D, second and third. Option E, third and fifth. Question number 52. The correct answer is this statement and this statement. Okay. Now moving ahead, question number 53. In case of specific performance of part of contract, the purchaser may not relinquish the claim to further performance of the remaining part of the contract and has no right to compensation. Option B, may relinquish the claim to further performance of the remaining part of contract and has right to compensation. Option C, specific performance of part of contract not possible. Option D, all of the above. Option E, none of the above. Question number 53. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 53 में कुछ जो थी मिस्टेक्स थी, जिस वजह से ये जो क्वेश्चन था ये डिलीट कर दिया गया था. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 54. कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेडर्स. ये तो सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से क्वेश्चन है, सीधी सेक्शन है आपकी, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं. विद सेक्शन 27 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. It's void. It's always void. Novation amounts to option A, discharge of contract. Option B, formation of consideration. Option C, remission. Option D, waiver. This is the discharge of the contract. Okay. Law of contract creates इस question में भी I guess question number 56 he deleted it. Void agreements include, ये भी बहुत easy question, very easy question. Void agreements include agreements in restraint of marriage, agreements in restraint of legal proceedings, agreements with minor, or all of the above. Question number 57 is very easy. I want you all to answer this. Question number 57. It's very easy. It's very easy. Answer कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी. Answer कीजिए. Very easy question. Correct. All of the above. ये सारे के सारे contracts जो है आपके
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, अग्रीमेंट विद माइनर भी जो है आपका वो वॉइड होता है। और ये आपको एक केस था मोहरी बीबी वाला केस जो है, अगर आपने पढ़ा हो, धर्मोदास वर्सेस धर्मोदास, ये उस केस में भी बता दिया गया था कि जो अग्रीमेंट माइनर के साथ होता है उसका नेचर कैसा होता है। आई होप इट्स क्लियर। Question number 58. A minor is not liable either personally or through his estate. Option B, capable of ratifying agreements. Option C, liable for necessaries supplied out of property. Option D, not permitted to plead minority as a defense. Question number 58. Question number 58. Is liable for necessaries supplied out of the property. Which is the first country to allow the voting through mobile phones? It's सीधा सीधा क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का था उस टाइम का। Okay. Who said the people have a right, inalienable, indisputable, indefeasible, divine right to that most dreaded and envied kind of knowledge, I mean of the character and the conduct of their rulers? ये किसने कहा था? Who said this? It is John Adams. Going ahead, match of the following persons in list 1 with their achievement. Rajkumari Amrit Kaur, Leela Seth, Sucheta Kriplani, C.B. Muthamma, first woman Chief Justice, first woman High Court, first woman Ambassador, first woman Central Minister. Okay. So the 61 maybe आपका था, which has been because of which कर दिया गया. Dash won the first Justice Prize from India, who is also named as the living legend of law by the International Bar Association. Krishna Iyer, Pali S. Nariman, Kapil Sibal, or none of the above? The option is correct here. Okay. Now the next question. Which one of the following decided to set up a website which will compare the world's constitution by themes online to arm drafters with a better tool for constitution design and writing? So it's Google जी, हर जगह वही है. Okay. Question number 64. In deciding the question of negligence by professionals, the classical statement of law, which has been widely accepted both by professionals generally and by medical practitioners in particular, is popularly called Ghulam test. Which one of the following disputes cannot be raised before the consumer forum? A dispute relating to services by a government servant, dispute relating to services provided by the medical practitioner, a professional, a dispute relating to banking services, a dispute relating to insurance services. Question number 65. कंज्यूमर फोरम में कौन से डिस्प्यूट को नहीं लेकर जाया सकता है? वो कौन सा ऐसे disputes है which cannot be raised before the consumer forum? The answer is this: a dispute relating to services by the government servant. Question number 66. Which of the following won the 28th UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage? ये उस टाइम के लिए important question था.
हमें अभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, ठीक है। बट इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको फिर भी। इट्स लद्दाख रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं अब। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। इसमें से कौन सी ऐसी जो है बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है उनके बारे में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स। बताइए क्वेश्चन नंबर 67। फाइनेंस कमीशन का तो बताया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट भी बताया है, जीएसटी काउंसिल का भी बताया, जिसका नहीं बताया दैट इज द प्लानिंग कमीशन। द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 68। Who authored the award-winning book Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World? रघुराम राजन। आरबीआई बैंक के सारे नाम है। उर्जित पटेल। आरबीआई बैंक्स के गवर्नर्स के नाम है रघुराम राजन, उर्जित पटेल, रविंद्र सुब्रमण्यम, गीता गोपीनाथ। इन्होंने ये बुक जो है ऑथर करी है। बताइए क्वेश्चन नंबर 68। द करेक्ट आंसर राम राजन। The voting age for elections to House of People and to Legislative Assemblies was lowered from 21 years to 8 years by Constitution 61st Amendment, 7th Amendment, 44th Amendment, or none of the above. Question number 69. The correct answer is 61st Amendment. आज हम 70 तक क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस कल देखेंगे। 70th क्वेश्चन जो है आपका वो है द लाइबिलिटी बाय होल्डिंग आउट इन केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर कंटिन्यूज अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिस अबाउट सच रिटायरमेंट, date of notice to other partners about such retirement. Option D, whichever is either out of A, B, and C. Question number 70. And the correct answer to this is option D. Okay. So with this, हमने आज क्वेश्चन नंबर 70 तक 30 से लेके 70 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, साथ में मिलके सॉल्व किए। कल हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे और इस तरह हमारा एक पूरा जो 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व हो जाएगा। और ये अभी टाइम भी वही है जहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs जो हैं वो सॉल्व करने हैं, बिकॉज दैट इज़ ओनली थिंग दैट गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन पेशेंटली। अब हम मिलेंगे कल और हम सॉल्व करेंगे बाकी के क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।